धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीळां वृदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां शुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् मुनिद्रवृन्दवन्दितं त्रिलोकशोकहारकं सदा सदा पदाहरं नमामि सिन्धुजाग्रतं कलाकलापशालिनं प्रमुक्तमुक्तमालिनं नवीननीरदद्युतिं नमामि चञ्चलाचलं विकल्पकल्पकल्पना विकल्पकल्पपादपम् अनन्तमन्तकान्तकं नमामि शान्तमीश्वरम् शुराशुराभिमन्थनं प्रमथ्यमथ्यमानव वराभयं गदं प्रदं नमामि सागरोद्भवम् अनाथनाथमाश्रयं परोपकारविग्रहम् अलोकलोकदर्शनं नमामि तं सुदर्शनं धराधरेन्द्रधीर्जटि किरीटकोटिचुम्बितं पदामृतं द्वयं प्रियं नमामि देवमद्वयम् विशेषशेषकृद्विषकथा विशेषमानुष त्रिदोषदोषशोषकं नमामि तोषकोशकं तमिन्दुकुन्दसुन्दरं दरारविन्दमन्दिरम् अमन्दमन्दमन्दनं नमामि लोकवन्दनम् अमन्दमन्दमन्दनं नमामि लोकवन्दनम् अमन्दमन्दमन्दनं नमामि लोकवन्दनम् नमामि लोकवन्दनम् नमामि लोकवन्दनम्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्वंतरी वंदना और धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करते हुए हमारे बीच में आज के हमारे आदरणीय गुरुजी जिनसे हमें आज के प्रोग्राम के लिए आशीर्वाद लेना है, ऐसे हमारे आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमारे युवा गुरुजी जिनको हमने युवा ही देखा है कि शरीर में कभी परिवर्तन हमने नहीं देखा, हम सब मोटे हो गए, सर को वैसा ही देखा है, ऐसे हमारे गुरुजी प्रोफेसर कमलेश शर्मा जी विद्यार्थी जी हमारे बीच में हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद और जो ऐसी संस्थाएं हैं उन सबसे सर को हमने शुरू से ही जुड़ा हुआ देखा है। हमारे तो गुरुजी भी रहे हैं, हमने इन्हीं के अंडर में एमडी किया है। सर फॉर्मर एचओडी हैं, रहे हैं एनआईए में संस्कृत एवं योग विभाग में। वर्तमान में सर प्रो प्रेसिडेंट हैं ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम के लिए और जो ये हमारा 7 दिन का सप्ताह है, आज उसका 6ठा दिन है, आपके आशीर्वाद के लिए सभी आकांक्षी हैं। कृपया सर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुःसुप्तस्य तथैवेति दूरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान प्रांत की ओर से यह जो शोध विधि अध्ययन का एक सप्ताह का आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के सब पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं, ये जो सारा क्रियाक्रम था, ये तदर्थो ही क्रियाक्रम है। ये सारा सब उपक्रम उन पार्टिसिपेंट्स के लिए था, उन पार्टिसिपेंट्स के द्वारा था, और उनकी उपस्थिति से ही, उनके पंजीयन होने से ही मुझे लगता है इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। आयोजकों ने एक बहुत अच्छा विषय चुना। आज संसार भर में जिस प्रकार की मांग आयुर्वेद की बढ़ रही है, साथ साथ ये भी आ रहा है कि एक रिसर्च प्रोटोकॉल, हमारे यहाँ अपनी शास्त्रीय विधाएं हैं अनुसंधान की, परंतु आज के विश्व को उसकी भाषा में समझाने के लिए तज्ञ लोगों के द्वारा जिस प्रकार का एक नयाचार जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उस प्रोटोकॉल के हमें अनुरूप हमें काम करना होगा, तो शायद हमारी बात ये आज का जो वैज्ञानिक विश्व है वो सुन और समझ सकेगा। और इसके लिए ऐसी तैयारी आयुर्वेद फ्रेटर्निटी की, आयुर्वेद समुदाय की चाहिए। ऐसी तात्कालिक आवश्यकता को देख करके विश्व आयुर्वेद परिषद ने इस विषय को इतना फोकस किया और देश भर के चुनिंदा जो शोध विधि विशेषज्ञ हैं, मैंने उस सूची में नाम देखे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन कर
आप सब पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ जुटाया है और मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों के लिए ये इतना उपयोगी होगा, समय की आवश्यकता को पूरा करने वाला होगा और विश्व मंच पर आयुर्वेद को उनकी भाषा में बताने के लिए ये उपक्रम बहुत सार्थक होगा, ऐसा मेरा मानना है। यद्यपि आयोजकों ने इसके और भी कुछ आयाम सोचे होंगे, वो निश्चित ही आप लोगों से उन्होंने साझा किए ही होंगे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का उपक्रम का कोई न कोई एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जरूर होता है और मुझे लगता है आज इस समय पर इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन युवा आयोजकों ने ये जो काम किया है, यद्यपि मुझे भी अपनी जमात में शामिल करके युवा कह रहे हैं, ऐसा कहने से ही मैं पुनः युवा हो जाता हूँ। इसलिए आप सब लोग जो इस सेमिनार में इस सेमिनार क्या कहें इसको, एक तरह से तो वर्कशॉप है, एक क्लास की सीरीज है, प्रैक्टिकल्स की सीरीज है और निश्चित रूप से आज भी क्षेत्र में जो नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, अनुसंधान के कहना मेरा आशय है, अनुसंधान विधि के क्षेत्र में, अनुसंधान में तो नित्य नए प्रयोग हो ही रहे हैं, लेकिन अनुसंधान की जो तकनीक, अनुसंधान की जो विधियां हैं, उनमें भी नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। एक जरूर इसमें देखने की बात है कि जिन लोगों ने ये तकनीक विकसित की है या जो इसके प्रारंभ करने वाले लोग हैं, उस मूल विज्ञान जिसको हम आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कह सकते हैं, हम भी यूं आधुनिक हैं, हम कोई पुरातन नहीं है, हम पुरातन से लेकर आधुनिक भी हैं। आज टाई भी लगा रखी है मैंने तो कहने का आशय यह है कि आयुर्वेद की प्रकृति के अनुरूप ये जो आधुनिक तकनीक है शोध विधि की, इसको हम किस प्रकार से अप्लाई करें, इसका उपयोग करें, जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं इस पूरी श्रृंखला के, हमें इस मार्ग में भी कुछ रास्ता जरूर सुझाएंगे। काम करते करते को ध्यान में आता है, क्योंकि एक शास्त्र विशेष की एक प्रकृति विशेष होती है और उस प्रकृति विशेष के अनुरूप ही उस तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। तो कई बार ऐसा लगता होगा जो नए अनुसंधाता उनको भी कि अनुसंधान की जो आज की विधियां हैं, उन आज की विधियों को तद्रूप उसी रूप में आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आयुर्वेदिक व्यवहार को पुष्ट करने में, उपयोग करने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, ऐसा मेरा मानना है। तो कठिनाई कहीं आती है, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी जरूर मिलता होगा। तो हम तकनीक वह काम में लें, विधि वह काम में लें, परंतु अपने शास्त्र के सिद्धांतों को भी हम बिना किसी तोड़े मरोड़े उनको अनुसंधित कर सकें। मुझे लगता है तकनीक में इस प्रकार का परिवर्तन हमारे लोग करेंगे, क्योंकि हमारी क्या आवश्यकता है इसका समाधान कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो शोध तकनीक के विषय में वर्षों से जो लोग लगे हुए हैं, इस सारे आयोजन के जो रिसोर्स पर्सन हैं, मैं समझता हूँ आयोजक उनके सामने भी बात रखेंगे कि हमारे शास्त्र का प्राण तत्व मौजूद रहते हुए फिर हम शोध विधि को अपना सकें, तो मुझे लगता है ज्यादा उपयोगी होगा। एक बार फिर से आयोजकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी पीएचडी प्रोजेक्ट्स पर एक लंबी वेबिनार चल रही है CCRA से, मैं उसी में जुड़ा हुआ था 3 बजे से, और अभी जुड़ने के बाद भी वो बराबर वहीं की आवाज, वो विजिबल जरूर नहीं था लेकिन ऑडिबल वही बातें हो रही थी, आप लोगों को सुनने के बजाय मैं उन्हीं को सुनने जा रहा था। तो मैंने एक बार फिर से स्विच ऑफ करके आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। और इस सारे आयोजन का श्रेय तो आयोजकों को ही है, इन्होंने पता नहीं मुझे आप लोगों के सामने क्यों रखा है, मेरा मान बढ़ाने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आप सब पार्टिसिपेंट्स को मैं एक हृदय से फिर से अभिनंदन करता हूँ। एक नए विषय को आपने चुन करके इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो इस शोध विधि को आप स्वयं भी अपनाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में इसका उपयोग करेंगे और इसको और आगे तक प्रसारित करेंगे, तो आयोजकों का ये जो प्रयास है बहुत सफल होगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभेच्छा देते हुए इस मकर संक्रांति उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं देकर के अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, हमारी पूरी टीम को और विश्व आयुर्वेद परिषद की राजस्थान प्रांत की शाखा को प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सम्मान तो हमारे हृदय में है ही, पर आप हमारे लिए माननीय भी हैं, तो आपका जो आशीर्वाद मिलना था वो तय था कि आपको आना ही है हमारे बीच, किसी न किसी एक दिन तो आना ही था। आज मौका मिला और ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसी के साथ हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है वो डॉक्टर राकेश राणा जी के द्वारा दिया जा रहा है। और राकेश राणा जी अभी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद पर CCRS के अंदर
हैं। इन्होंने पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है ये, और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की तरह सीसीआरएस में रहे हुए हैं पहले। अभी फिलहाल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं। सर का काफी लंबा अनुभव है, उनका लगभग 75 प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने डेटा एनालिसिस किया हुआ है, और अभी भी उनके इन हैंड 25 प्रोजेक्ट्स रेगुलर चल रहे हैं। 12 मोनोग्राफ आसपास सर के अभी तक पब्लिश हो चुके हैं, और 50 से ऊपर सर के पेपर हैं। राकेश राणा जी हमारे बीच में हैं, जुड़ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके सर आप आपका प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। बीच में इंटरप्शन नहीं हो, मैं क्षमा चाहूंगा, अभी वो कुछ प्रोजेक्ट्स फिर बाकी हैं, तो अगर मुझे अनुमति देंगे आयोजक तो मैं उसमें शामिल हो जाऊं वापस। मैं खुद भी वंचित रहूंगा, राणा जी का व्याख्यान मैं भी सुन पाता तो अच्छा रहता, लेकिन अभी वो सीसीआरएस वाली अभी सेमिनार चली रही है। राणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर को प्रणाम, सर को प्रणाम। सर मैं भी इसी ही आप ही की तरह से मैं भी उलझा हुआ हूँ इसी तरह से, क्योंकि आयुष पीएचडी वाला ही चल रहा है, और उसमें भी वो भी एक सजेशन दे रहे होते हैं। बराबर चलिए तो लेकिन इट इज लक सर कि हमें आपको सुनने का मौका मिला, और बीच में भी हमें आज सुनने का मौका आपको जरूर मिले। जैसे ही वहाँ फिनिश हो जाए सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैं जरूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट सर। शुरुआत करें। बहुत आपका आशीर्वाद हमें मिला, आपने समय निकाल के हमारे बीच में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश कुमार राणा जी से निवेदन करूंगा, सर आप को होस्ट हैं, और आप अपनी स्लाइड से प्रेजेंटेशन जो भी है वो शुरू कर सकते हैं। सर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल जी। सत्र में मैं अब अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। जी सर। और आज ये राष्ट्रीय युवा दिवस पे सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज अपने जैसा कि आपने भी बताया कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती भी है। और भाई ऑडिबल एंड विजिबल ना सर? सर आपकी आवाज आ रही है, विजिबल भी है, ऑडिबल भी है, एंड स्क्रीन ऑल्सो? हाँ स्क्रीन ऑल्सो सर, बट फिलहाल कैमरा है। अभी आपने स्क्रीन शेयर किया है तो फिर अलग बात है। इज इट ओके? हाँ इज इट ओके सर, बट आपने स्लाइड शेयर किया है अभी? मैंने शेयर किया है सर अभी। हाँ पर अभी आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया शायद, अभी कैमरे से आपका ही फोटो नजर आ रहा है। ओके 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 सर, नाउ इट इज ओके सर? यस सर, यस सर, आपका प्रेजेंटेशन शुरू है सर। Thank you, Rahul ji, to giving me an opportunity to talk about this topic in definition of statistics and relevant and general applications. Giving ये तो सबसे लास्ट में रखा हुआ टॉपिक के पार्टिसिपेंट्स की भी शो कर रही है कि हाँ भाई स्टैटिस्टिक्स है ये टॉपिक, तो इसको चलो कोई बात नहीं, जैसा कि हमेशा एज यूजुअल देखा जाता है स्टैटिस्टिक्स का नाम सुनते ही अरे यार ये तो न्यूमेरिकल आ गया, इसकी क्या जरूरत है और कैसे करेंगे। एक मेजर हुआ जो हमारे एक कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है कि आज स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ी बात है। मैं सभी को एक छोटा सा बहुत छोटे से एग्जांपल्स देकर के यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो एक ग्रुप है, हमारा जो स्टैट्स का एक ग्रुप है जिसमें कि डॉक्टर ऋचा है और डॉक्टर अर्नब त्रिपाठी जी हैं, तो हम आपको स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक क्या है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या है उसके बारे में हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, क्योंकि मेरा आयुर्वेद रिसर्च में अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और हम जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं जैसे कि आपकी प्रकृति हुआ, आपके श्रोतास एग्जामिनेशंस हुए, आपकी टाइप ऑफ शक्तियास, व्यायाम एंड ऑल, तो हमने इसके ऊपर भी अपना जो आपका जो इन चीजों को डीप एनालिसिस करके इसमें क्या क्या बेस्ट हो सकता है और किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसी चीज को एक अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, देन विल फॉरवर्ड। कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे अपनी स्लाइड्स में। एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्राइब द टू ब्रांचेस special branches of the statistics, identify and the fundamental elements of the statistics.
analyze the data and predict the futures and better decisions also. What is statistics? सबसे पहले जब भी आता है दिमाग में क्या statistics है क्या? Game of numbers, probabilities. But one thing I would like to say that statistics are a science which is play in the life of everyone, sir. Let's say you can take an example like this, that your breathing, it is come and out. So it means you have the probability of come and out is been 50%. So statistical part is also being used in every part, every moment of the everyone, sir. So it is a simple examples for this. And another what the exactly is in plural form, it's referred to the numbers data, but in singular forms is academic disciplines. So we can go ahead to give the another definition of the statistics is, statistics is in a science of the data that deals with the scientific collections, organizations, presentation, analysis, and interpretations of the numerical data in order of obtain useful, meaningful information. Let's say how it's become a data, how become useful informations. Statistics is used a major vital play role. So how we can go in the statistics, the collections of the data and whatever the scattered data is there, to make it organized way and presented that data. What is statistics all about? Because I think most of the participants are been students, and whether they are been maybe of MD or PhD and BMS also or and so on. हम सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट. सबसे पहले जब हम अपनी कोई भी रिसर्च का पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेट्स से एमडी पार्टिसिपेंट्स, उनको सबसे पहले सोचना होता है कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, कौन सी रिसर्च है, उस टाइप ऑफ रिसर्च क्या होनी चाहिए, रिसर्च स्टडीज क्या होनी चाहिए. उससे पहले हम उसकी जो प्रीवियस स्टडी की गई है उसका लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए. तो आप what you have to do, the research questions first, then make the study proper design, and what is the way how you are going to be collect your data, which is more and more preciously. Because of that, whatever the things is going to be happen in your projects and your research, once your data is in a proper way and you are in a positions to be represent, so that only your studies and your whatever the research you have been done will give the benefit to the communities also. Statistics methods, what I have told you earlier, that is two specific methods for the statistics are: one, descriptive methods; second, it inferential methods. In descriptive methods, what we do normally, make the tabulations of the data, and accordingly we'll make the diagrams and put the summaries for this. That's the descriptive data methods are there. We have the lots of formulas are there, lots of methods are there according to the requirement of the variabilities and the data too. And inferential methods, what we do, we required the estimations. There are so many types of estimations have been available. That point estimations, in point estimations, we do the mean and the proportions. Interventional estimations, confidence interval of an point, hypothesis techniques, and hypothesis testing, comparison between the two treatment, association, and so on. To start our studies, we go through everything over there. We done our literary research, and what after that, what our plan, what is the major role of our side has been that what type of variables we have to be used
to by which we can get the more and more reliable informations. And there is very much confusions between the variables and the datas and blah blah blah. So it is the simplest way how to go to deal with your type of variables and type of datas and so on. So this is the simplest definition is observable characteristics of the phenomenon, person or object, whereby the members of the or the set varies from one to another. Type of variables. यहाँ से we'll go to understand why very clearly. Type of variables, we have two type of variables, that is one qualitative and quantitative. Qualitative and categoricals, you can say either categoricals or the qualitative. बिल्कुल आप उसको अलग डिफाइन नहीं कर सकते हम. we can go in the same pattern there. So what is the main things will come out in the qualitative and categorical. First we'll discuss about this qualitative and categorical data variables. What are they? In this we have the two categorizations. Number one is nominal and ordinal. Nominal example is, that is what you can take, because so many informations will collect of the patients in the hospitals, and most of the person, those who have been working, those who are doing their PG and so on, they have a type of formats are there, but they don't know what type of data are there. They are storing, and what type of information they can representation. They can represent their information in a proper way. So that type of nominal data, what are they? Number one, type of gender, male and female, smoker and non-smoker, yes or no, treatment group or control group, cure or not cure, yes and no, and where you can only identify only, but not make any order. So that type of variables are called nominal variables. Ordinal variables are where you can put an order. Let severity of disease. That I think most of the people very much aware about vast scale, and that is related to the you can use your severities, and you can use whatever the scales is available on the medical scenario field. So severity of the disease, that much 0 to 25 days, 25 to 50 days, 50 to 75 days, 75 to 100 days, and dose group 1 and 2, and so on. That is these type of data are called qualitative or categorical data variables, not the data. The quantitative data are also distributed in a two-way. Discrete. What is discrete? I think everyone knows about that, but what is the exact meaning of this? The exact meaning of this, that where you can count the number, as a whole. As a whole, that this type of variables are called discrete variables. And in continuous variables, where you can put, you can calculate the values of our variables up to decimal points. Let's say number of patients in a hospital, that will not come into the decimal points. Number of staff available in the chemistry department, that will not come into the points. But what is the average age of the department of the Kaya Chikitsa staffs?
that will come into that points and so on, and what is the BP values and so on. So these type of variables are continuous variables, and the variables where we can get the exact number is the discrete variables. I can go ahead. That is, which discussed earlier over there, that is are variables that can be obtained by the counting. The number of the patient in the hospital, the number of the person in a family, outcomes in a rolling a pair of the dice. So I think it is very much clear. And what type of variables are called? The discrete variables, where you can count like 1, 2, 3, 4, 5, and that type of variables is called are discrete variables. Another, continuous variables, a variable that can be obtained by the measuring, that is objective attributes also. So let's say average of a BP of the medical staff in a hospital, weight of the students in a school, amount of money spent in a health in a family, and body temperature of a patient, and you can take an average of the body temperature of that. So that this type of data, this type of variables are where we can put measuring. So let's say in examples, BP in medical staff in a hospital, and so it will come into like once we'll take the average, it will come some it could become into that let's say points something and else, and as weight also, weight of a students, average weight of a students of a school, that also come into like 50.5 and 60.5 the average weight of the of students in schools. Now further, discrete and continuous variable, which already been discussed earlier, and it will give on a tabulation form, so where you can get instant difference between this. Discrete count the individual items, and continuous measurement of the continuous or the infinite values there, because in continuous variables, where if the two numbers are there, let's say 10.1 and another is become to 11.1, so it is an infinite numbers between these two. So that is the mention in that table, that measurement of continuous or the non-infinite values is continuous, where you can put it over there. The type of example says distance for continuous variable, distance, volume, age, and number of the different trees species in a forest. So I'm going to forward. Now the binary versus nominal versus ordinal variables. Once your concept is clear about the variables and the data, I'll make sure that you will not do any mistakes to retrieve your data in a proper way and present your data to the statisticians, and they'll analyze in a better positions and give you the better interpretations, results of your studies there. So type of variables, let's say binary outcomes. Binary outcomes, there are the two outcomes only, yes and no. Let's say the example of that two outcomes is heads and tail of a coin, win or lose of any games. Nominal data, which I have told you earlier also, where we cannot put any order,
and no rank also. So spice name, let's say Kali Mirch and Hari Dhania and blah blah. Colors you knows very well that white, it's black, yellow, and blue. Brands. So it is there are these are the variables where we cannot put anything not in a order, will not give any ranks to them also. Ordinal variables are like this, that group are ranked. In ordinal variables, we can put the order in between them. Let's say finishing place in our race, 1, 2, 3 will come. First, second, third will definitely come. Rating scales. What is the rating scales? Which you already been done. Once you will transactions your your money with the Paytm, and Paytm will ask, please provide the rating scales. And you normally, if the thing is been moving in a good mood, then you can give the rating scales in a proper way, else whatever, but it is a type of that only, the rating scales response in a survey. That is our ordinal variables. Now so one thing has been from my side, Dr. Rahul and Dr. Gautam sir, if anyone has any problems regarding the understanding of the variables, I would like we'll have the words with the students after completing that session on whatever the things you suggest to me. I'm ready for that. Dr. Gautam and Dr. Rahul. यस सर. हाँ सर, जो भी क्वेश्चंस है ना उनको हम लास्ट में ले लेंगे, और जितने भी स्कॉलर्स हैं वो सभी के सभी चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप कर रहे हैं. ओके सर, वो लास्ट में ले लेंगे सर. आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज. ओके सर. Now I think from my side that type of variables a little definition has been completed regarding that categorical and your continuous variables are being cleared from my side, and whatever the queries you have, later on we'll have the discussions on that also. So dependent variables, we have heard that name, the dependence variables. It means by the name itself, it says that it is depend on the another variables. Variable effect by the independent variable. That's mean, let's say, एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसी में आपको देना चाहूंगा. डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज दिस? लेट्स से a patient is suffering from stress and hypertension. We are using some scales for the stress measurement also. So stress level is maybe stress level is independent variables, and the BP is our dependent variables. Once the stress level is down, and then we can say that BP of a hypertensive patient, it could be a down also. So that is dependent. BP is depend on the stress level. So BP is become the dependent variable of independent stress level. So it responds to the independent variables. Now I go ahead further. What is independent variable? Variable that is presumed to influence other variables, which I have talked to you earlier. And it is presumed, because whereas the dependent variable is the presumed effect. So I have the words and I give the examples for this same. And further, the examples I would like to be shared with you. You are interested in that the example is come for this as the same written here. How stress affect mental state of human beings. I given you the example how the state effect of the BP level of the
hypertensive persons. So it is a same one. How stress affect mental state of human beings. Here, the stress is independent variables, and the dependent variables is mental states of a human being. So it is very much clear what is the dependent variables and what is the independent variables. You can directly manipulate the stress level in your human subjects and measure how those stress level change the mental states. So this is this example will give you the very much clear pictures that how we can make dependent variables, and what is the dependent variables, what is not a independent, what is a dependent variable, and what is the independent variables. Go ahead for the another one. The same examples. Let's say promotion affects employees' motivations. Correct. Promotion affects the employees' motivation. The independent variable is promotions, because promotions affect the employees' motivations, because once timely, if the thing has been happening, the employees will happy and do his job in a better way. When it will not move suddenly, that if the person will not promoted on the right time and so on, maybe whatever the cause may be bad, that definitely he'll suffer for this. So it means that the independent variable is in a promotion, and dependent variable the motivation of a employee. Now, interim and mediating variables. It is a variables whose existing in inferred but cannot be measured. I'll give you an example of the same. This is the example of a video clip determining the effect of the video clip on learning abilities of the subjects of Manas Mandita. The association between video clip and learning abilities needs to be explained. So I think the association between the video clip and learning ability needs to be explained. So effect, what are we are going to be measuring there, the determining the effect of the video clip on the learning ability of the subject of Manas Mandita. Let's say some age group we have been defined over there, that up to this level we are going to be studies of our video clipping. So let's say 10 to 20 years childs, we would like to be put this video's effect on the children's, whether they are trying to be improved or not. So the association of videos and learning abilities on the subject, that association is called the intervening or the mediating variables. And other variables, I think it is very much clear. The statement is very much clear about this. What is the mediating and intervene, and other variables intervene, such as anxiety, fatigue, motivations, improper diet, and so on. Same thing is been continued. So the other examples I'll tell you over there. It is a cause by the independent variable and itself cause of the dependent variable. How? Just read this. It is a cause by the independent variable and is itself a cause of dependent variables. Just the example of the same. Higher education typically leads to a higher income. As normal as we are seeing the present scenarios, that most of the people, those who have been studying in the convent schools and the educations, we thought that they are getting the better educations and so on. So that in prospect of this, we have put this example in front of you, that higher education now become the independent variables. But
higher education's uh, higher income is dependent variables, and best occupation is intervening variables. So I think my words previously, which I have given you the example. This, it is caused by the independent variables and is itself a cause of dependent variables. The higher education is independent variables. It's a that higher income is dependent variable, and the better occupations intervene variables are there. It is causally affected by the educations and itself affect the income. I think it is very much clear for the students, and we will have the words later on. Now, the another control and the constant variables will come out. Please do not get the board because of that. The variables and the data are more sensational, more important part of your study. Once your concept is clear about the variables and what type of variables you are going to be used in your study and what type of informations you wanted to be represented by your study. So it is that play a major role, vital role to get your study in published in a better journals and all. Control and constant variables are variables that is not allowed to be changed. Let's say we already been heard about that, the randomized control trial, where you can put on a control, and during the studies you are not been able to be you are not going to be changed that control. That is an example in front of you. It is a variable that it is not allowed to be changed unpredictably during an experiment. So it is an example of control variables. And constant variables, as they are ideally expected to remain the same, they are called the constant variables. They are not going to be changed. They are putting as a constant variables. So the example for them is, an example of the constant variable is which I have given you the example of the studies earlier. Talk about that, what is the control. And the example of the constant variable, a voltage from a power supply. The voltage from a power supply, if you are examine how electricity affect experimental subject, you should keep the voltage constant. Otherwise, the energy supplied will change, the voltage will change. The example of a constant variable, a voltage from a power supply, we are going to, if we are going to be examine how electricity affect experimental subject, effect on experimental subject, we should keep keep the voltage constant. Otherwise, the energy supplied will change as the voltage will be changed. Now, interval variables. What are the interval variables? I think in interval, by the mean of the word says itself says that interval variables have a numerical values. Let's say a simple example I would like to give it to you in front of you right now is been that, let's say we have the age. We have the age from 18 to 70. So we'll make an interval and make a group of the intervals there. So and the values and the frequencies of the occur in the interval variables that's come to the side of that, and that type of variables, that is type of variables are called internal variables, that interval variables there. So interval variables have a numerical values. These have order and equal intervals, which I have told you
Right now, they allowed not only the rank order, the items that are measured, but also to quantify and compare to the magnitude of the difference between them. For example, suppose we have a variables such a monthly income that is measured in rupees. We have three peoples, like one is 10,000, another is 15, and another is 20,000. So variabilities, these are the group, these are the interval groups. Let's say how many people, those who have been receiving the salaries of 10,000, that the number of the frequency will come in front of this. Wherever whatever the queries you are putting, that how many employees are working in a factory, where those who have been receiving the salaries between the 10,000 or 15,000, that will come in front of that. So these type of variables are called interval variables. Now these things will come under ratio variables. Ratio variables is similar to interval, but one difference is ratio makes sense. Like example, let's say respondents were being surveyed about stress level on a scale. What is the scale is 0 to 10. So a respondent of the with the stress level of 10 should have twice the stress experienced as the respondent who selected a stress level at 5. Age, height, weight are also the good example of the ratio. I think that the stress level of 10 should be twice at the stress experience as a respondent who selected a stress level of 5. So the stress level of 5 and on the scale of that stress level. So this type of variables, let's say age, height, weight are also the good example of the ratio variables. Someone who is 6.0 tall as someone who is 3.0 tall. I think it is giving you the very clear pictures that what is the ratio variables. Now I'll give you a beautiful tabulations by which you can see and learn easily what are the nominal and continuous and ordinal binary data. All are comes into the tabulations. How you should be. I think by this you will understand very clearly. Let's say what are the plants. We have the plant species A, B, C. It could be B, C, D, and so on. Salt added. These are the patterns where they've been plotted. Starting heights 12 centimeters, 13 centimeters, 11 centimeters, and so on. Growth, it will growth 2 centimeter, 3 centimeter, 1 centimeters. Watching rank 0 to 10, 5, 6, 4, 7. Survival, survived or died of a plant species. Yes or no? So what is plant species variables? That's become a nominal, where we are not put any order in a variable that the plant species like you can say Godavari, Gulab, and so on. What the type of the species are there. So where we can put and we can put in a code also, but these type of things will come in as a taken as a nominal variable. And what are the continuous variable, which I have told you earlier, where we measure the exact value of the variables. Let's say salt added,
how many this or not. Starting height of the plant. Starting height of a plant is this, and growth, they are growing in 2 centimeters. Let's say the plants who have the height 13, it's coming the 3 centimeters. And vaulting, we are putting on the proper rank by using some scales there. So that scale is itself says that it is a ordinal variables, and survival, whether the plant is survive after the study, yes or no. So that yes and no is a binary variables. I think that type of variables, and what type of variables you are going to be used in your studies, by which you can get the your studies in a better way, and your information which should has to be reflected by the statistical analysis report. So everything has been correlated with each other's. Before conducting studies, you should design your studies completely, go through your studies, whatever, what kind of data variables you are going to be used, and what are the informations you wanted to be represent and give to the public, and says that this is the informations we have been collected and which we are going to be represent to the public by the help of the statisticians too. And the another is qualitative variables, which are we already been discussed now, though how we measure the quantitative data. That the measurement of the qualitative data is like we can use measure tendency. This topic has been deeply discussed by our colleague Dr. Arnab Tripathi ji. Yes, tomorrow itself. That mean, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, medians, even and odd and mode. I'm just giving the name of that, and he'll discuss about the in detail. What are the parameters? What are the characteristics? What are the benefits? What are the advantages? And what are the disadvantages for the major locations, quartile, decile, percentile, and so on. Categorical variables, where you can see the frequency, percentage, prevalence, and incidence, and so on. And quantitative, which I have been shown you the earlier also, the mean, median, range, interquartile, range, ST, standard deviations. Now, I think ये जो slide है आपको, ये why I mean trying to show that now everything is over related to the variables. Nominal and categorical variables, which we already been discussed, are simplest things we would like to be just emphasize. My point is that these type of variables measure only in terms of the whether the individual terms belongs to the certain distinct categories. We cannot quantify, even rank, order the categories. Nominal, oblique, categorical. Nominal data has no order. One cannot perform arithmetic, plus, minus, and logical operations on the nominal data. And variable also. Example, which I have shown you at the earlier also, but wanted to be confirmed that now after repeating these examples, you have been very much clear about that. What is that? What is exactly is? So gender is an example for this, that male and females, marital status is unmarried, married, divorcee and widows, that is widowers, sorry. And so they can select any one of them. These are the characteristics of the variables, nominal ones. But the ordinals, we know upper middle is higher than the middle, but we cannot say how much higher is. So an ordinal variables is nominal variables is a nominal variables, but the different states are ordered in a meaningful sequence.
ordinal data has the order, but the interval between the scale points may be uneven. Because of the lack of the equal distance, arithmetic operations are impossible, but legal operations can be performed on the ordinal data. A type of examples which for you, it is correctly said. The example of this, like our studies also, the response of the patient in a so iron deficiency anemia, that the HP performance of a study, let's say after follow-up, that BT and AT if will taken of that. So we earlier that was not been we can say that our study is been we'll put the rank over there, that moderate one, he got the relief, moderate, severe, and whatever the conditions, how many percent will come from moderate to severe, moderate to nominal one. So that is the example of that any studies there. So in this type of questionnaire on the time involvement of the scientist in the perception and identification of the research problem, the respondent were asked to indicate these involvement by the selecting one of the following code: very much low, medium, great, and very great. There are the variables time involved in ordinal variables with the 5 stages. What is the dummy variables? We have heard so many times that we'll make a dummy variables. Dummy variables kya hai exactly? What are the variables we have in front of us? Just make a dummy the name of the another variables as the same. Now the example is descriptions. Gender variables name is gender, and what we are going to find out over there, that is the male and females. We have coded over there that F for females and male for females. You can put it over there, the coded also, that is when one for male and second for female. Whatever you want it to be. That is dummy variables is help to the statisticians to get the retrieve the informations what in what way he wanted to be. So it will help them out to analyze in a proper way. In the D1 job categories, clerical or otherwise, D2 categories custodian or otherwise, and so on. So you can give a proper coding or that type of dummy variables, put the name of the any specific variables. So these type of variables are being called as a dummy variables. Now by this table, I think everyone has been very much familiar, because earlier we have been discussed for this. Now why I am showing you this table again is there is some reason behind this, because all pictures, all colors has been very much clear that what are the nominal data, what is the ordinal data, what are the continuous one, what are the binary data. So what here I'm giving you the difference between the variables and the data. What is the major difference between or minute difference between variables and data? What are the variables? Variables are sample, plant species, salt added, starting height, growth, vaulting, scale, and survival. These are variables which already been we discussed about that also. And what is the data? Whatever the values been filled, whatever the values has been filled in these tabulations, let's say 1, 2, 3, 4, 5 in samples,
plant species 1, A, B, and so on. Salt added this 125 mm, and starting height of the plant is 12 cm and 11 cm. Growth 2 cm, 1 centimeter, 2 centimeters, and so on. And that watching 0 to 10, and survival yes and no. So store the data in a variable. Variables are mentioned very clearly, and under the variables we store the values which in each columns. That's called our data. I think this points will clear. Because of that, there is a very much someone definitely asks what is the difference between the variables and the data. And I definitely says that this minute difference is been very much been clear, but sometimes it will become very awkward to be say that what exactly is the difference between the variables and the data. Now I think these are the questions we would like to be have the later on, and that the goal I would like to be discuss these points which has been major helping to the people, those who have been involving their self in a research. Please go for these golden rules once you are reporting your numbers. It will be to benefit it to each and everyone. Once in a sentence is number less than 10 are words. So what is the best way to be correct in expressions is, in the study group 8 participants did not complete the interventions. In a sentence is number 10 or more are numbers, there are 120 participants in the studies. So exact correct. That is should not be use the words of expressions, any number that begins in a sentences. 20% of the participants always use like this in the number in the characteristics. So these are the major golden rules would like to be give. I have already been submitted my PPT to this Dr. Gautam also, and Devendra sir also, and it is a request. Once you'll go to follow these things, I think in a it's your reporting patterns. Once you will go through all the following, what you have to do or what you have not to be. So it will give you the major benefit how to write a proper article and how to interpret it, whatever the statistical reports you received with. These things should be in a proper manner. So report percentage should not be in decimal. Another example is if the sample size is not less than 100, because that things will already become out that now this scenario, that pandemic situations, most of the studies we have been seeing that they have conducted their studies nearby 30 to 40 patients, and they wanted to be claimed that this and this, and they have how they have been represent their data in shown that the 80% of the patient, 90% of patient got relief after receiving their treatment. But once how you also been just very easily, if you have the number of the sample size is 50, and you are going to be represent that
that 90% of the out of 50. So, but that's not represent the population, and you are not you will become in a position to be claimed that yes, correctly said that so I'm in a position to claim for that type of claim for my drugs to start uh, with this pandemic situation. So it is very much clear that report percentage with no decimal places if the sample size is less, and even though if your number is very less, you are shown your correct version has been said that the sample of 44 children's 11% has diabetes. That percent, no need to be shown that percent also, but you can put the exact number. Once your sample size is less, please do not try to be use the percentage. Don't use the percentage if sample size is less than 20. That is a humble request, because the percentage always represent a data of a huge populations from where you can get the samples also. Now I would like to be discuss about some point on the hypothesis. Because of that, these are the things which we already been discussed, and because some students got some confusion in type of what type of hypothesis and what type of error and blah blah blah. ये सारा जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हाँ यार टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, और स्टैटिस्टिकल पावर क्या होती है, ये पी वैल्यू क्या होती है, और ये जगलिंग वर्ड्स स्टार्टिंग में सबको कंफ्यूज कर देते हैं. तो I would like to be clear some points regarding the hypothesis, where I think that this is the major points which everyone has to be clear. They'll not have any doubts in their self for this. So a little change in my slides, which already been submitted to the concerned sir. What is the exactly hypothesis is? Hypothesis is predict the statements capable of being tested by the scientific methods that rate independent variables. Now, once I'll talk about any independence, any dependence, and so on, blah, blah, blah variables, I think everyone has been very clear that what is dependent variables and what is the independence variable. So hypothesis is a predictive statements capable of being tested by the scientific methods that related to independent variables to some dependence variable. A hypothesis states what we are looking for, and it is proportions which can be put to a test to determine its validity. The students who receive the counseling will show a greater increase in a creativity than the students not receiving counseling. So, what are the characteristics of the hypothesis? Characteristics of the hypothesis. Your hypothesis very much clear, precise, and your capability to being tested, state relationship between the variables, limited in a scope, must be specific, stated as far as possible in the most simple terms, so that the same is easily understood by all the concerned. But one must remember that simplicity of hypothesis has nothing to do with its significance. Consistence with most known facts, responsive to test with the reasonable times. One cannot spend a lifetime collecting data to test it. Explain what is the claim and explain what should be comparable empirical references. हाइपोथेसिस का नाम आते ही सबसे पहला तो व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, आप सभी लोग
very much clear about that. What is null hypothesis? By null hypothesis, we taken a variables and we'll say that it is no effect, and we taken two variables when we can say there is no difference between them. So in this hypothesis, we already we denoted it. It is H naught. Null hypothesis is denoted H naught. A population mean is equal to the hypothesis mean. That null hypothesis, there is no difference. First, we assume that there is no difference. Once it's come to the alternative hypothesis, that alternative hypothesis has the three assumptions. It is not equal to, correct, and it could be more than 2, whatever the hypothesis we decided. It could be more than, it could be less than. So the alternative hypothesis is negation of full hypothesis and denoted by H1. As I have shown you earlier, that H naught, that mu is equal to mu naught, and then alternative hypothesis can be written as this, the three assumptions which has been mentioned here. What are the statistical error? Statistical error. There are the two situations in which the decisions make on the data becoming wrong, and data becoming wrong due to what? So due to maybe a statistical error. These type of error are in the statistics or the statistical error we call. So normally, generally, we are very much been familiar, and I think most of the people, those who have been related to in such type of studies and the research, those who have been involved themselves, so they knows that what are the first type of error, when what are the two type of error. There are the two type of simple in a general way we can say this. So we'll discuss the type of 1 and type of 2. What is type 1 error? Just I'm reading the statements that the mistake of rejecting the null hypothesis when null hypothesis is true means, it means that whatever the null hypothesis we have been set, it is rejected, but it should not be rejected because it is true. We have rejected by mistake. That type of mistakes is called type 1 error. That is not a miscalculations or procedural error, but a rare event that happens by chance. A failed positive in a HIV test mean declaring person has HIV when actually he does not have it. That is false positive. In present scenario also, we got so many false positives in the corona test. So they are repeating again and again. Why the thing is not been happening, because so many characteristics is being shown in the patient, and that the reports already will say that it is negative. Why should not the false positive, that type examples will come in front of you also now nowadays. The probability of the rejections of the null hypothesis where it is true is called the significant level of the alpha or alpha. I'll discuss later, and in details our Dr. Richa will provided you that each and everything related to all parametric, non-parametric, and so on in coming lecture. So I'm coming to the last of this, that we can decrease the chance of the type 1 error by increasing the confidence interval. Type 1 error, जब हम ये सोचते हैं कि जो null hypothesis हमने डिसाइड किया है, हम उसको रिजेक्ट करना पड़ता है, रिजेक्ट करते हैं जबकि वो ट्रू है.
ये इसका एक बाय मिस्टेक ये प्रॉब्लम होता है। सेकंड क्या है, मिस्टेकन ऑफ द फॉल्स रिजेक्शंस नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं जब वो फॉल्स होता है। यूज द रेस्पॉन्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइप 2 एरर। मिस्टेक ऑफ फॉलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। आपको एग्जांपल यही देता हूं मैं, सेम एज व्हिच इज गिवन यू द अर्लियर आल्सो। फॉल्स नेगेटिव टू द HIV patient means declaring the person does not have HIV. That means that the test shows that the person don't have disease when he actually have. I think this example is very much clear about type 1 and type 2 error. So that 2x2 table सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा है, बहुत अच्छी सी चीज है, और इसको समझ में नॉर्मली इसको परेशान होकर के समझने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत इजीली लेना है। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, सेकंड है फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ट्रू एंड नल हाइपोथेसिस फॉल्स। व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, दैट्स कॉल्ड टाइप 1 एरर। And once we'll say reject the null hypothesis when it is false, we'll say that type 2 error. Fail to reject the null hypothesis. When fail to reject the null hypothesis when it is false, that is type 2 error, and reject the null hypothesis when it is true, type 1 error. So we represent this type 1 error is by alpha and the type 2 error by beta. Another one, sorry, some new things will come to in front of you that you also been gone through somewhere sometimes, that there are the type 3 error. And you will surprise. I'll give you a surprise in the coming slide also. Some statisticians are adopting a third type of error, the type 3, which is where the null hypothesis was correctly rejected, but for the wrong reason. वो रिजेक्ट हुआ करेक्टली, लेकिन उसका रीजन जो जेन्युइन होना था वो उस रीजन से नहीं, बाय चांस वो करेक्ट हो गया। An experiment and a researcher might postulate a hypothesis and perform research after analyzing the results. Statistically, the null hypothesis is rejected. The problem is there may be indeed be some relationship between the variables, but it is not the one stated in the hypothesis. There is no error in rejections, the null hypothesis here, but the error lies in accepting an incorrect alternative hypothesis. Hence, is still unknown process may underlie the relationship, and researchers are none the wiser. As an example, researchers may be interesting to see if there is any differences in two groups means, and finding that there is one, so they reject the null hypothesis, but don't notice that the difference is actually in the opposition directions to what their results found. Perhaps random chance led them to collect the low score from the group in higher and higher score from the group that is in reality lower. This is curious way of being both correct and incorrect at the same times. As you know, amazing three type of errors are very rarely occur. Key point to be remember, when we are make power as large as possible, make the probability of the type 2 error as small as possible, will make the power as larger as possible. These are the procedures
hypothesis, how we just just hold on. I think that type 3 errors which we have been already discussed right now. What I would like to be say that there are the type 4 error also. Why I have not been put it over there, the slides there, because there is some reason. Once you understand this type 3, that the type 4 is when I'll come to this point by this only. Type 4 error is some statisticians are thinking about that to that where is the null hypothesis was correctly rejected by the wrong reason, but he interpreted it wrongly. That interpretations of the your reports or your hypothesis wrongly, interpretations wrongly is itself a type 4 error. That is usually it's not took place, very rare chances to be occur there, but nowadays this type of error is also been occurring somewhere somehow. But we should has to be know that why the type 4 error is to which I have told you that wrongly reproduce the representations of your studies, of your hypothesis. Key points have already been discussed. Procedures of hypothesis testing, null hypothesis. कैसी सर? सर हाँ, एक मिनट रोक रहा हूँ आपको, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। प्लीज सर। हाँ, पार्टिसिपेंट्स थोड़ा हिंदी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा। सर सॉरी सर, मुझे पहले ही बोल दिया जाता सर, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी सर। नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत। ठीक है सर। नल हाइपोथेसिस ये एक सर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट है सर। मैंने जो भी स्लाइड्स दी हैं इसमें बहुत वंस यू स्टडी, जब आप इसको स्टडी करेंगे ना सर, एक एक लाइन एक एक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर पोजीशन देते हैं सर। प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज स्टेट द नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब हम स्टेट कर लेते हैं, बना लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारी ये है कि हम देयर इज नो डिफरेंस इज नल हाइपोथेसिस, देयर इज द my drug is better than the another drug is hypothesis should be not equal to, should be particularly significant level is 1%, 5% and 10%, and decide the test of statistics, calculate the values of the test statistics, calculate the p-values is given, compare the p-values calculated, and so on. This is the procedure of the hypothesis testing. So lastly, I'm audible now, sir? Yes, sir. Sir, lastly, I would like to say and would like to conclude myself for this. The statistics without common sense leads to be, this is the example what it says. A person who's moving across to the river and he'll take the average height of a group and said that that average height is 5.1. So that 4.1 the person, those who have that height, maybe across that the river. So without common sense, they moved and it's going to be. So this is the example that I would like to be a simple, humble suggestion, sir, because any type of studies, if you are going to be conduct, first of all, consult your statisticians, because they'll guide you in a proper way that what kind of studies is been benefited to you and what kind of way you will adopt, what are your primary outcomes should be there, and what type of variables of your outcomes variable should be there, primary, secondary, and what is the best way to be designed. Sir, अभी जो अपने वैद्य सर थे आए हुए कमलेश जी थे, उन्होंने बोला कि प्रोटोकॉल डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों को अब स्टैंडर्डाइज के लिए
प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स मिलने अवेलेबल हो चुके हैं। तो मैं एक छोटा सा सबमिशन देना चाहूंगा, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे भी सर आप यू कैन फाइंड आउट ऑन अ प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड protocols where by use of them you can create your studies accordingly, sir. And now आज Ayurveda is defied to that modern one, sir. आपने एग्जांपल अभी लेटेस्ट लिया ही था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब स्टार्ट किया और अडॉप्ट किया कि नहीं भाई ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ऑप्ट होगा, तो कितना उन लोगों को, एमसीए वालों का कितना ऑब्जेक्शन आप लोगों के सामने भी था। लेकिन अल्टीमेटली द वे ऑफ द our faculties are scientifically representations of our data which has been earlier been decided, and now we are putting them in a scientific way. तो आज हम उन लोगों को we are in a position to be tell them that what are you are doing correctly said, and we have been doing along with that current modern examples. उसके साथ साथ हम अपना आयुर्वेदिक पैरामीटर्स का भी यूज करते हुए हम उनको इन बेटर वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो तब हम उनके बात को बिल्कुल कट करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी जो ड्रग का इम्पैक्ट है इट इज फार बेटर देन दैट द अनदर मॉडर्न ones. And I think that's all from my side, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. This is a nice presentation, I thought. And now this is the question answer session. Yes. And I would like to invite Dr. Vaibhav Vapat. Sir, you are listening me? Dr. Vaibhav Vapat. Yes, sir. Namaskar. नमस्कार सर। सर प्लीज, वैसे तो काफी सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आए हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं, और एक बार सर को क्वेश्चंस को कंक्लूड करते हुए उनका आंसर लीजिए। डॉक्टर वैभव वापट। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के मुख्य आकर्षण श्री कमलेश कुमार सर, और आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार राणा सर, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें बायोस्टैटिस्टिक, वेरिएबल, मेजरिंग, एरर्स और एरर्स में भी कुछ नई बातें जैसे टाइप 3, टाइप 4 एरर के बारे में भी बताया। तो इसमें हमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझ में आई है। कुछ गोल्डन रूल्स उन्होंने बताया जो कि अभी पीपीटी सबके साथ शेयर होगी, तो इनके लिए एक असेट रहेगा सर की पीपीटी। मतलब इसमें कुछ जो है सर क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन है और जो हर किसी बीएमएस या पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है आयुर्वेद के, उनके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि हमें बायोस्टैटिस्टिक पढ़ना है तो उसके लिए कौन सी किताब को हम रेफर करें, कौन सी किताब हमारे लिए जो है वो ज्यादा उपयोगी रहेगी। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर प्लीज। सर मैं इसकी डिटेल मैं सर को जरूर प्रोवाइड करूंगा, और क्योंकि बेसिक से देखिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ बापट जी। देखिए हमारा जो रिसर्च जो एरिया है हमारा, हम किसी भी फील्ड को ले रहे हैं, अपने आयुर्वेदिक फील्ड को ले रहे हैं या किसी भी रिसर्च फील्ड को ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये है कि जो स्टैट्स को समझना है तो स्टैट्स को बहुत सिंपल वे से हम उसको समझना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से हमको समझ में आता है। हम उसको बिल्कुल विल नॉट ऑपरेट फ्रॉम द स्टैट्स एंड स्टैटिस्टिशियंस टू, क्योंकि ये आपकी जो किया गया काम है इसको मोर साइंटिफिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप विद द टूल्स, with the confirmation from the sides of our statisticians confirmations, तो वो आपको बहुत अच्छे से देगा। बुक्स के बारे में जो अच्छी बुक्स है, जो बेसिक्स बुक्स है, मैं सर को अभी इस सेशन को खत्म होने के बाद मैं सर को एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि जो बच्चों को बताएं और उनको पता लगे कि हाँ ये बुक्स पढ़ने से इजीली उनके क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी डाउट है, कोई भी मन में डाउट्स है, तो सर we are always been there, whatever the queries, whatever the questions they have kept in their minds, we always been in a position to be sorted out. थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन है सर कि
एक तो पी वैल्यू और स्टैटिस्टिकल पावर के बारे में कुछ बताइए, इसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है। अब एग्जैक्टली मैंने जानबूझ करके नहीं रखा इसमें पी वैल्यूज और आगे फर्दर के लिए, क्योंकि मेरे आने वाले जो प्रवक्ता है और वो जो आपको एक एक चीज हमारा सेक्शन ने पूरा का पूरा डिजाइन करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए किया। पी वैल्यू ऑलवेज कंपेयर टू द कैलकुलेटेड वैल्यू होती है सर, और पी वैल्यूज को हम सबसे बड़ी बात यह है, आप पी वैल्यू पे आए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो सबसे पहले सैंपल साइज पे आए अपना, वो सबसे पहले अपने डिजाइन स्टडीज पे आए अपना, वो अनदर पार्ट है। बहुत सारी चीजें हैं, पी वैल्यूज तो इट इज नथिंग सर, एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन से वो अपनी डाटा को रिप्रेजेंट करना है, विच इज इंक्लूडिंग द एरर अल्फा 5%, जिसपे हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर लेते हुए जो वैल्यूज कैलकुलेट होके आती है उसको कंपेयर करते हैं, तो वो लेट्स से इट इज लेस देन 0.001, so we can put it as a significant, or if it is more than 1, less than 0.005, so we can say it is not significant. ये एक बहुत छोटी सी बात है सर, आपको इन डिटेल में मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स को और सभी को कि प्लीज जो आने वाले ये जो कल का भी दिन है, जो आज का भी दिन है, आप सब इसको जरूर अटेंड करें। मैंने कुछ चीजें हिडन रखी है, कुछ चीजें नहीं बताने के लिए रखी है, वो अभी आपको आने वाले सिनेरियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है सर? हाँ सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर कोमल शर्मा जी की तरफ से कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन कलेक्टेड डाटा एंड एरर? सर बिल्कुल हो सकता है सर। एरर तो कहीं भी अकरेंस किसी से भी किसी भी रूप में हो सकता है। लेट्स से व्हाई वी आर बी टेकिंग द 5% ऑफ एरर हमेशा लेके चलते हैं हम, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा 95% पे लेके चलते हैं, तो वो यही है कि जो छोटा एरर होता है, जो कोई भी एरर लेकर के किसी भी डाटा में हम कम से कम एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एरर इज 5% कम लेकर के चलते हैं। ये तो है, वो तो रिलेशन आ ही जाते हैं वो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप यदि अपनी डाटा एंट्री आप करवा रहे हैं या किसी से कर रहे हैं या खुद भी कर रहे हैं, तो आप कभी ये होता है कि एक कॉलम की वैल्यूज दूसरे में चली जाती है, आपको अंदाजा ही नहीं हो पाता कि वो इंफॉर्मेशन कहां से कहां गई, लेकिन अल्टीमेटली वंस वी विल कैलकुलेट इट, वी फाइंड आउट दैट दिस इज द कंफर्मिंग वेरिएबल्स, दिस इज द प्रॉब्लम्स अकरिंग वैल्यू, विल डिस्कस फॉर दैट। तो ये चीजें तभी सॉर्टेड आउट होती है सर। ये एरर अकरेंस तो ये ह्यूमन एरर्स भी है और ये रिलेशंस है ही सर, इसमें डेवलप होते ही होते हैं। सर इसी से जुड़ता हुआ अगला सवाल है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैंने ये कहा, मैंने जानबूझ के देखिए हर एक चीज बाइफरकेट किया है। मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने उनको ये बताया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम 95% लेते हैं। क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्यों का मतलब मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। नॉर्मल अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे बताने पे वो डेप्थ की चीजें आपको नहीं पता पाएगी, जो कि वो आपको एग्जांपल लेकर के वो बताएंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है कि दो चीजें होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल में, दो वैल्यू होती है। आप ये समझिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल में सिर्फ दो वैल्यू होती है। जो वैल्यू होती है उन दोनों के बीच में जो वैल्यू लाई करती है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। उसके बीच में जो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो उसके बीच में लाई करती है, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है। कि 95% जो हमारे प्रोजेक्ट जो हमने माना है कि 95% जो वैल्यूज है वो इन दोनों ही डाटा के बीच में वैल्यू आएगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये एग्जैक्टली होता है और इन डिटेल में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा सर। मैं क्योंकि कुछ ऐसे हैं एरियाज बाइफरकेटेड है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कर देता हूं। हेलो, आई एम ऑडिबल है सर? यस सर। मैं इतना आपको श्योर कर देता हूं, वॉट एवर द क्वेरीज यू हैव इनपुटेड ओवर देयर, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बहुत सिंपल ये जो क्वेरीज है इसमें भी ये समझ लेना चाहिए। नॉर्मल बेल टाइप कर्व होता है,
उस कर्व के बीच में जो हमारा जो वैल्यूज लाई करती है, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एट द 95% ऑफ द एरर कॉन्फिडेंस लेते हैं, एरर 5% लेते हैं। जब आपको पूरी, अभी क्योंकि मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं कि मैं आपको क्रिएट करके वो सारी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, जो भी वैल्यूज उस स्टडी की, जो इसका हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं, उस जितनी भी डाटा होगा, लेट्स से बीपी का मैं आप एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ। मेरा बीपी का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है वो आता है 107 और 68 और 145 और 110। ये मेरे पास ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि मेरी जो की गई स्टडीज में है, ये मेरी जो इसमें सारी की सारी वैल्यूज लाइक करेगी। तो 95% चांसेस ऑफ द जो मेरी बीपी की वैल्यूज है वो ये होगा कि वो इसमें इसी के बीच में हमारी जो वैल्यू लाई करेगी। एक दो जो यदि कोई आता है तो कंफाउंडिंग फैक्टर्स है, जो मैंने आपको बताया था एरर, वो ऐसे भी हो सकते हैं सर। उसको आपको इन डिटेल पूरा मिलेगा उसको। सर लास्ट, जी सर। ठीक है सर, और एक लास्ट क्वेरी है सर, टाइप 4 एरर थोड़ा आप हिंदी में समझा देंगे क्योंकि बहुत लोगों को समझा नहीं है। चलिए सर, मैं, हाँ, कोई नहीं सर। टाइप 4 एरर, टाइप 3 तो समझ में आ गया होगा सर मेरे ख्याल से। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 ये है कि हमने जो अपनी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करी है, और उसका टाइप 3 कहता है कि होनी जिस रीजन से चाहिए थी, रीजन कोई और है बाय चांस, वो टाइप 3 हो जाता है। ठीक है। अब ये टाइप 4 क्या कहता है कि हमने जो अपना इंटरप्रिटेशंस ऑफ ये नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन का लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन का जो रीजन लिखते हैं, हमने वो जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, वो गलत कर देते हैं, वो टाइप 4 एरर हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये है सर। और कोई क्वेरी हो तो सर बताइए, आदेश करिए। हाँ सर, लगभग सारी क्वेरीज हो गई है। ये आप बहुत अच्छे से आपने जी सर। थैंक यू सर। आप कुछ बता रहे थे? बस यही था, तो कोई भी हो आप हमारे पास नोटिस कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस आपको जो जिनको थोड़ा जो भी डाउट है, क्योंकि मैं जानबूझ करके अभी इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। और कल आपका जो है, कल बहुत अच्छा चैप्टर भी है, और दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से है। सारी बुक्स की डिटेल्स मैं अपने जो कोलीग है उनको बोलता हूँ कि वो लास्ट स्लाइड में, क्योंकि मेरे को बुक्स का नहीं पता था कि कैसे करना है, वो कल आपको लास्ट स्लाइड पे सारी बुक की डिटेल्स भी, जो सिंपल बुक्स है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बुक्स है, उसकी डिटेल्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर वैभव बाबट।